all the amazing humans. You know you are amazing. तो ये चीज हमेशा याद रखना. Never self doubt yourself. Whatever you are, be amazing. So इसी अच्छे से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास for the 9th standard mathematics, basically based on the standard textbooks, and we are beginning with the chapter 6, which is a very fundamental chapter called lines and angles. Okay, we are beginning with this chapter, lines and angles. If you talk about your NCERT textbook, it is the chapter 6 from your textbook. But majorly, the syllabus of all the different state boards also is same. So, the chapter number can be different, the basic concepts will be similar. So, you can go ahead with this lecture also. Okay, so beginning with this, let's talk about what are lines and what are angles. तो हम हमेशा से जब भी हम कोई चैप्टर स्टडी करेंगे उससे पहले हमारा फर्स्ट जो मोटिव होगा दैट विल बी टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द चैप्टर. व्हाट डज द नेम इटसेल्फ मीन, देन ओनली वी कैन गिव डीप डाइव इनटू द चैप्टर. जब तक हमें चैप्टर का नाम का मतलब नहीं पता होगा वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर इनसाइड द टेक्स्ट बुक. ओके, so line, isn't it a very common word that you already know? Line is a straight line, right? So in mathematics when you say line is something that goes infinite, moving from this to this is called line. Arrow on both the sides, and this arrow indicates the infiniteness of the line. Means it is not limited to this particular point. It is going infinite on both the sides. That's what line means. Now coming to another topic, another concept. When we are taking one smaller part, let's say we are taking this smaller part of this line and magnifying it like this. So what we get next is something called like this with a limited point, the finite points. जब हम line में से कोई एक particular portion निकाल लेते हैं, what we are getting, suppose give it a name A, B. So what will this be called? This is line was infinite, going infinite on both the sides. Now coming to the finite part of the line. We are taking some smaller part of the line. जैसे आपने एक बड़ा सा केक लिया उसमें से एक स्लाइस निकाल ली, राइट? उसी तरह से हमने इतनी लंबी सी लाइन में से क्या किया, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइन को हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं. We are measuring it. So the end points if we are able to see, then it is called line segment. Means we are taking one segment of its line and looking at it by a magnifying basis. Clear? So these terms are very important because in the chapter ahead the questions will be based on these terms only. So if you don't know the terms, it will be difficult for you to solve the chapters. Okay. Now coming to the next. Now when you are taking one part, suppose now this is a line, we are taking it from here and just taking this part, this portion of this line. So what you will get? You will get like this. Now this is a finite thing, but this side infinite. So when we are taking one end of the line till the finite part, so one point is finite, let's say it is O. Now another point is going infinite. What does it mean? It is called ray. Like a ray of light, है ना? Light आती है from the sun and coming here. So वहाँ से originate इसका finite है, but here till infinite wave it is coming, right? So it is called a ray. Now coming to the next concept. Now talking about some points. Give me an answer. Please write in the comment box how many points, the minimum points you require for forming a line. कितने points की आपको जरूरत पड़ेगी to make a line? Let me draw this one point. Can you make a line from this one point? Is it possible to make a line? No, right? You need one more point, and then only by joining it you can form a line. So basically, for forming a line, you need minimum of 2 points. So when we are talking about points can be further, we can discuss about points of the two types. We have collinear points and also we have the non-collinear points. Now what does the collinear point means? Collinear points are the points which are lying on the same line. Means what? If I am drawing these points, all the points are lying in the same line. सब हम एक लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं सारे पॉइंट्स को. मीन से पॉइंट कैसे हो गए? दे आर collinear points. Now suppose मैंने एक पॉइंट बना दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. Now are these points collinear? Can you combine all these points in single line? You know what is line, right? हम line की definition पढ़ चुके हैं, so line should be clear to you. Can you compile all these points in a single line? Is it possible? No, right? You can join any 2 points in one line
Like this you can join in one line, like this you can join in one line. So any 2 points are collinear, but not all these 3 points are collinear. Means they are non-collinear points. They are not the collinear, but they are non-collinear points. Right guys? Okay. मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई भी डाउट हो, you can freely ask in the comment box. I am here to solve all your doubts with very good ease. Okay, clear still now? We are understanding lines and angles, the name of the chapter. First of all, beginning with the line, then we saw a line segment, then we saw ray, then we saw two types of points, collinear and non-collinear points. Remember, to form a line, what is the minimum number of points we require? Minimum number of 2 points we require for forming a line. Got it? One half part of the chapter name, right? हम chapter के name को explore कर रहे थे ना? Just give this try. आपको लग रहा होगा time waste हो रहा है, maybe we're not really jumping into the chapter, but to know the name of the chapter, to know the understanding name of the chapter is very important. आपको पता होना चाहिए आप पढ़ क्या है. So lines वाला part हमारा complete हो गया. Now coming to the angles part. Now what does the angle mean? How does the angle get formed? So we first saw the ray, right? हमने देखा था. What is the ray? Ray is one side finite, one side infinite. This is what we called as ray. So when we seek two rays originating from the same point, means एक ray हो गई, एक और ray हमें लेनी है originating from the same point. इस point से ये वाली ray originate हो रही है, next point ray भी हमें इसी point से लेंगे. So when we draw one more ray from this point, क्या मिलेगा हमें? What you will get? So when you are taking two rays originating from same point, this what we are getting in the middle is called the angle. आ गए हम इस part पे, angle वाले part पे, right? So this is the angle. This is the angle. When so कैसे पता चला? Angle क्या होता है? अगर पूछेगा कोई angle, how angle is formed? So when you take two rays originating from same point, we get an angle. Clear? All clear? चलो, very good. Now note down this once. Just note down this. All of these rays and segments, draw them, understand the collinear and non-collinear points, keep it in your mind, starting with the angle. Now, in the next part, we'll move forward with the types of angles. How many types of angles are there? Copy it down first. We are done with this part. Now coming to the next one, types of angles. You understood how the angle is formed? When you join two rays originating from the 2 points, same point. That's what we call it angle. So this particular thing is called angle. Okay, now angle can be of different types. Depending on this ray, how much space is between the ray, depending on that there can be different 5 types of angles. Let's start with this. बहुत बेसिक चीजें हैं, आप पहले से पढ़ चुके हो, सुना है एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल. You have heard all about it, right? तो क्या होता है? What is acute angle? When I am saying acute angle, what does it mean? Means angle will be less than 90 degree. So when we are forming an angle, and if the angle measurement is less than 90, means it can be like this, it can be like this, it can be like this, but somehow जैसा भी होगा, this will be less than 90 degree. This angle is less than 90, then only we call it an acute angle, right? This is very basic things. Let's just quickly recap these things. Next we have obtuse angle. I am expecting that since you are come in 9th standard, आप लोगों को ये चीजें काफी clear होंगी from your earlier standards. फिर भी we are starting with the basics, so no problem if you don't know, don't remember also. We are revisiting and revising everything. Okay. Now coming to obtuse angle, यहाँ पे क्या होगा? It will be more than 90 degree. The angle will become more than 90 degree. Means the angles will be like if you are taking this as a 90 degree, all the angles will be like this, this. It will be more than 90. The angle forming will be more than 90 degree, and that's what we call as obtuse angle. अब हम दोनों में 90 की बात कर रहे हैं, तो 90 डिग्री के एंगल को भी तो कुछ बोलते होंगे ना, उसका भी तो स्पेसिफिक नेम होगा. So let's go for it. Then we have right angle. Obtuse angle के बाद हमारे पास आता है right angle. What is right angle? That we talk about acute is less than 90, obtuse is more than 90, so right angle is exactly 90. तो आपका जब एंगल ऐसा बनेगा, it should be exact 90 degree. That's what we call it as right angle. Clear? Easy? Okay. अब ये तीनों काफी यूज टू टर्म्स है, आप काफी बार पढ़ चुके हो. अब थोड़ा नया जाते हैं.
व्हाट इफ मैंने एक रे यहाँ से दो रेज ओरिजिनेट कर रही हूँ मैं, एक दिस साइड पे एक इस साइड पे, क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस इज ऑल्सो एन एंगल, नहीं लग रहा ना, लाइन जैसी लग रही है, सबको ऐसा लग रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, कैसे आप इसको एंगल बोल सकते हो मैम? तो मेरी प्यारे बच्चों, इट इज एन एंगल। कौन सा एंगल? अगर हम पॉइंट को ले रहे हैं, हम अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, व्हाट इज दिस पार्ट? दिस इज 90 डिग्री, व्हाट इज दिस पार्ट? दिस इज 90 डिग्री, है ना? स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री बनता है, मींस व्हाट वी आर गेटिंग, क्या मिल रहा है यहाँ पे? मींस दिस होल एंगल इज 180 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं, दिस एंगल हैज अ नेम, इसको भी हम एंगल का नाम होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, दिस वी कॉल इट एज स्ट्रेट एंगल। क्लियर? तो स्ट्रेट एंगल, इसको लाइन नहीं समझना, लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पे मैंने बीच में एक सिंगल पॉइंट लेके दो रे ओरिजिनेट करवाई है, तो वो लाइन नहीं है, इट इज अ स्ट्रेट एंगल। ओके, कमिंग टू लास्ट वन, रिफ्लेक्स एंगल। दिस इज समथिंग जो आप लोगों को न्यू लगेगा शायद, because reflex angle is something that you have not studied before. So coming for reflex angle, what is the reflex angle? Now draw any angle, आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर दो, ये मेरी दो रेज से एक एंगल बन गया, what will be the reflex angle? तो अगर मैंने बोला कि ये कोई एंगल है, तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? इसका पूरा अपोजिट वाला पार्ट, मीन ये वाला एंगल हमारा मेन एंगल है, what will the reflex? रिफ्लेक्स हम इसको बोलेंगे, इसके अपोजिट में जो एंगल बन रहा है, इट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल मेजर कैसे करते हैं, उसको फाइंड कैसे करते हैं, कि पूरा सर्कल में कितना एंगल बनता है, ये सब चीजें, सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए ना, सो स्टिक टू द वीडियो एंड वॉच द नेक्स्ट लेक्चर कमिंग अप सून। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी आपको मिलने चाहिए, चलो आज कोई होमवर्क नहीं, दिस इज द फर्स्ट क्लास, सो बिगिनिंग विद दिस जस्ट ट्राई टू रिकैपिटुलेट एवरीथिंग जो भी हमने पढ़ा है, डेफिनेशंस को प्रॉपर्ली नोट बनाओ, व्हेन कमिंग टू माय लेक्चर आई वांट एवरीवन टू कीप अ नोटबुक विद यू एंड राइट ऑल द डेफिनेशंस, एवरीथिंग, जितना आप लोग ज्यादा लिखोगे उतना आपको ज्यादा अंडरस्टैंड करेगा। क्लियर? कोई भी डाउट है कि पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, राइट द डेफिनेशंस इन योर नोटबुक। क्लियर? दो रेज हम जिसको ज्वाइन करके एंगल फॉर्म करते हैं ना, दैट आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, आर्म्स ऑफ द एंगल, एंड these are called vertex, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, जो हमारा पॉइंट बन रहा है, द एंड पॉइंट्स ऑफ द रे, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। क्लियर? Now for solving the exercise questions, before solving the sums about this, the basic definitions we have already understood. Now let's come to the next concept, linear pair of angles and vertically opposite angles. So अभी तक हमने basic angle समझ लिए, line समझ ली, different types of lines, rays, line segments, right? Now coming to linear pair of angles. अच्छा हमने कौन से 4 टाइप्स के एंगल्स पढ़े थे? 5 टाइप्स के एंगल्स पढ़े थे। कौन से एंगल्स थे? acute, try to recall, obtuse, right angle triangle, है ना? Then which one was the next? Reflex angle and straight angle. अच्छा, what was straight angle? Straight angle एक बार गाइस की कोशिश करो, क्या था straight angle? अच्छा था, लाइन की दिख रहा था, मैंने कहा था वो लाइन नहीं है, हम मैंने दो रे बनाई है इधर। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इसका मेजरमेंट इट इज 180 डिग्री। इससे क्या पता चल रहा है, अगर आप कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लोगे, द सम ऑफ दिस एंगल, द बेसिक जो एंगल से बनेगा वो क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। नाउ व्हाट इफ मैंने इसमें रेज एक रे दो रे ड्रॉ करने के अलावा और ज्यादा मैंने रेज ड्रॉ कर दी, मींस व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई डिड, आई मेड अ स्ट्रेट लाइन and this is the my origination point of all the rays. All the rays are being originating from this point. These are two rays. What if I draw one more ray here? Angle तो बदल जाएगा again, right? ये पूरा angle is a straight angle. It will always remain 180. Now next case में this is my originating point of ray. ये एक ray के साथ मैंने एक और ray draw कर दी, एक और ray draw कर दी. क्या होगा? क्या लगता है? What will happen now? क्या होगा इसका sum? What will be sum of these angles? Means again अगर आप इन सारे पूरा एंगल फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, you will find it as 180 degree, and this is what we call as linear pair of angles. What does it mean? When you are taking a straight line and you are making, जितनी भी आप रेज बना रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे सबका सम कितना होगा, always 180 होगा, and this is what we call as linear pair of angles. When two are there we can call it pair, and if more than two are also there, हमेशा क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन पे आप जितनी भी रेज ड्रॉ कर रहे हो उन सारी रेज का अगर आप एंगल निकालोगे तो टोटल विल बी ऑलवेज 180 डिग्री। चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं, शायद थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है।
तो आपको अप्लाई करने में एप्लीकेशन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नाउ मैंने ले ली एक सेंटर पॉइंट, टू रेज, नाउ आई एम ड्राइंग वन रे हियर। व्हाट आई वाज सेइंग, मैंने बोल दिया कि ये एंगल 60 डिग्री है एंड यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। क्या करेंगे हम इसको फाइंड करने के लिए? व्हाट वी कैन डन, हम इतना तो पता है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या बनाती है? एक स्ट्रेट एंगल बनाती है। मींस व्हाट यू कैन से, सपोज वी गिव इट अ नेम, हमने दे दिया इसको ए बी सी एंड डी, नेमिंग कर दिया हमने, नेम करके हम ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। क्लियर? नाउ सी, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल, ए बी इज अ स्ट्रेट एंगल, मतलब क्या होना चाहिए? ये जो एंगल है हमारा, एंगल ए सी डी, दिस स्ट्रेट एंगल शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का क्या मतलब है? ये जो दो एंगल बन रहे हैं, दे आर लीनियर पेयर। व्हाई? बिकॉज़ ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स lying on a straight line. So what will happen? What does it mean? अगर आप AC B एंगल को दो एंगल में डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा? One angle you are getting is angle ACD, मिल रहा है ACD, है ना? Plus what you can write next angle? BCD. The next angle will be BCD. And this should be equals to 180 because ये 180 हमें ऑलरेडी पता है, सिर्फ हमने ACD की जगह पर हमने स्प्लिट करके लिख दिया, है ना? लिख सकते हैं ना? मैंने एक लाइन बनाई, this is A, this is B, this is C, this is D. What can I do? मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं A D को कैसे लिख सकती हूँ? I can write it as AB plus BC plus CD. लिख सकती हूँ ना मैंने पूरा AD की जगह में इसको प्लस दिस प्लस कर सकते हैं हम ये, नो प्रॉब्लम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल दिया मैंने, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया? मींस ये दोनों क्या बन गए? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गए। हमें फाइंड क्या करना था? ये वाला एंगल फाइंड करना था, ये हमें 60 दिया हुआ है, मींस में हमें क्या दिया? BCD 60, तो BCD की जगह 60 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? इस साइड पे तो 180 है, ये हमें फाइंड करना है सपोज, तो क्या होगा? 60 प्लस 60 आ जाएगा, क्या हो जाएगा? -60, so 180 minus 60 is equals to angle ACD। 180 minus 60 आप करोगे कितना आ जाएगा? 120। So we got angle ACD is equals to 120. This question mark हमें मिल गया, इसका आंसर is 120 degree. Clear? So this is what is linear pair of angles. इसको हम बोलते हैं linear pair of angles. So whenever ये हमसे दो एंगल्स के लिए लिया, आप कितनी भी रे ड्रॉ कर दो, सबका एंगल कितना होगा? हमेशा 180 होगा। याद हो गया? अच्छे से याद है? ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ व्हाट डज इट मीन? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है? अगेन आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या लेंगे? आपको दो दो लाइन लेंगे। लाइन पता है ना? लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, सबका डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं बोल रही हूँ नाम एंड यू हैव टू गेट द क्लिक इन माइंड। कैसा दिखता था लाइन? लाइन कैसे थी? लाइन वाज इनफाइनाइट ऑन बोथ द साइड्स, ऐसी कुछ थी लाइन, है ना? लाइन सेगमेंट क्या था? इसका हमने बीच का एक पार्ट ले लिया, तो ये हमारा बन गया एक लाइन सेगमेंट, है ना? इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते थे। फिर रे क्या थी? रे क्या थी? ये हमने एक साइड से लिया और इसको पूरा यहाँ से कट कर दिया, तो हमें एक मिल गई रे। इसका एक वन एंड पॉइंट है और इसका इनफाइनाइट जा रहा है। क्लियर? चलो, ग्रेट। यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल, आप टॉपिक से बाहर नहीं जाते, हो जाता है आपको समझाने के चक्कर में मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक के बाहर चली जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब हम वर्टिकल अपोजिट एंगल समझते हैं। क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स? मतलब आपने दो लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज लाइन ए बी एंड दूसरी लाइन आपने ड्रॉ कर दी ऐसे, इसको क्रॉस बना दिया, क्रॉस कर दिया आपने सी डी। तो व्हाट डज वर्टिकल अपोजिट एंगल मीन? आप दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब है वर्टिकली अपोजिट। अब यहाँ लेट्स से इट इज ओ, एंगल BOC, है ना? और नेक्स्ट इसके सामने वाला कौन सा एंगल है? ये वाला, ये क्या है? एंगल AOD। व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल मींस? ये दोनों एंगल, एंगल BOC एंड एंगल AOD, they are vertically opposite angles. क्या है ये? VOA is vertically opposite angles. सेंटर में VOA लिखूंगी तो क्या मतलब होगा उसका? vertically opposite angles. क्लियर? ये दोनों vertically opposite angle है। अब और कोई vertically opposite angle का पैर दिख रहा है इस डायग्राम में? Can you see any other pair? दिख रहा है ना मैम? हाँ मैम, दिखाई भी दे रहा है, इसके सामने ये वाला पैर देगा। ये क्या है? AOC, ये वाला, एंड अनदर इज दिस वन, ये वाला। दिख रहे हैं दो एंगल्स? ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल ही लग रहा है ना, दो लाइन सेगमेंट ऐसे कट किया है, उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, अपोजिट वाले एंगल्स को। तो ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये कौन सा? इन एंगल्स का नेम क्या है? नेमिंग देना आता है ना सबको, AOC। हमें ये एंगल चाहिए ना,
जो एंगल हमें लेना है उसको हमें सेंटर पे रखना होता है उस वर्टेक्स पे। ये क्या है, हमारे वर्टेक्स है, तो इसको सेंटर पे रखोगे। हमारी कौन क्या है, ए ओ सी, एंड अगेन ये वाला एंगल कौन सा है, बी ओ डी। बी ओ डी क्या है, अगेन ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। क्लियर हो गया। अब लीनियर पैर में क्या सीखा था, जो सारे लीनियर पैर्स होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले सारे एंगल्स को लीनियर पैर्स बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, दो लाइन सेट में दो हमने लाइंस ले ली, अपोजिट में जो कट करके जो ऐसे क्रॉस बना के जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं आप ऊपर नीचे, वो क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो अब इसका रूल क्या था, जितने भी एंगल्स आप लोगे यहाँ पे लाइन सेगमेंट में, सबका सम कितना होगा, हमेशा सम विल बी ऑलवेज 180 डिग्री। व्हाट इज द रूल फॉर दिस, क्या रूल है इसके लिए, क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल पता चल गया, पहले आइडेंटिफिकेशन कर लिया हमने। नाउ व्हाट इज द रूल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब जो एंगल ये है, सपोज इट इज एक्स, तो ये भी एक्स होगा, सपोज ये वाई है तो ये भी वाई होगा। यहाँ पे सबका सम 180 हो रहा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल के क्या रूल है। ये क्वेश्चन बहुत आपको काम आएगा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल के, खुशी हो जाएगी, वाओ चलो वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया, वेरी इजी क्वेश्चन। सो यू कैन इजीली फाइंड, अगर एक्स आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल दिया है, आपको फाइंड करने के लिए ये वाला गिवन है, very easy to solve, right? So it is a kind of dopamine that you will get by seeing the vertically opposite angle. It is very easy and quick solving concept. So क्या रूल है, जो vertically opposite angles हैं B O C, पहले तो vertically opposite angle आइडेंटिफाई हो गए, अब इनका रूल क्या होता है, they are equal. जो B O C की वैल्यू होगी वही A O D की वैल्यू होगी, and similarly for A O C and B O D also. So this is what vertically opposite angle means. These angles are always equal. Clear? All the concepts are done. Okay, let's recapitulate once. Last one. क्या किया हमने? We started with the lines and angles. Started to explore the name of the chapter. What does it mean? We talked about line and then angles. Lines हमने start किया line, then line segment, then ray. Then we talk about how two rays when meets from the same point, they form an angle. है ना, कैसे वो angle form करती है? Right? Then we saw 5 types of angles: acute angle, obtuse angle, then right angle, straight angle and reflex angle. Clear? Now next we saw the types of angles के बाद we saw the two types of angles which we use in application part in the solving of the questions. Linear pair of angles. Linear pair of angles straight line पे जितने भी angles ट्राई कर रहे हैं वो सब क्या है, linear pair of angles है। pair हमेशा 2 का होता है, तो मोस्टली हम 2 को linear pair यूज करेंगे, otherwise we solve this linear angles. Okay, तो हमेशा इनका सम कितना होगा, 180 होगा सारे angles का। Then we saw vertically opposite angles. दो straight lines ले ली आपने, और यहाँ पे जो ऊपर और ये नीचे, ये दो जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, they will always called vertically opposite angles. तो ये वाला एंगल vertically opposite है, यहाँ पे ये वाला एंगल vertically opposite है। They are always equal. Vertically opposite angle identify करने के बाद क्या बताना है, they are equal angles. Vertically opposite angle हमेशा equal होगी। Clear? Hey dear hustlers and amazing people, thank you so much for watching this video for so long. I appreciate your dedication, your passion, and your motivation to study. This is your Mahima ma'am. All the lectures will be continuing in the same way. We'll keep learning new concepts in interesting way, in easy format, so that आपको समझने में कोई difficulty ना आए। फिर भी अगर आपको कुछ भी लगता है कि कहीं पर भी improvement की जरूरत है, हम हमेशा feedback के लिए open है। तो please do comment. Gmail पे आप मुझे mail कर सकते हैं, या फिर आप comment box में अपना कोई भी suggestion put कर सकते हैं। We are here to improve, we are here to grow together. Thank you so much for watching, and don't forget to share this video and or the channel with your friends. Do like, share and subscribe. Thank you so much.